और मैं चाहूँगा कि आप किसी को भी किसी प्रकार का अगर प्रश्न हो अपने कैरियर से या एजुकेशन से या फिर मतलब नौकरी से रिलेटेड, तो आप बेझिझक पूछिए। परिमल गारू, हेलो। Yeah, I have to mute him. Anyways, please carry on, sir. You can carry on with the discussion till the time if anyone has a question. Yeah, basically that's what I was trying to tell Pandiji. If at all, if we can, I will try to introduce technology, and once that application is ready, we can take it forward. That's what I was trying to tell him. So let us do that. That is a side talk which we can do it. Pandurangaji, whenever you are ready, I will try to introduce on that day to him. Let me know your time and date and time, and sure, just ping him or WhatsApp to me. Okay, sure, sir. Sure. All right, sir. Thank you. నీటి పరిమళాలు సార్, మీరు మీ పరిచయాన్ని ఇవ్వండి, ప్లస్ మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్ ఉంటే అడగచ్చు. అదే ఇందాక లోకేష్ గారు అడుగుతున్నారు, మీరు ఏం మాట్లాడలేదు, సో ఈ మ్యూటెడ్ యూ. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్, మై నేమ్ ఈజ్ మత్స్య రామాంజనేయులు సార్, and I'm in Anantapur district, sir, Andhra Pradesh, working as a government teacher, sir. Great. Sir, I can speak in Telugu, okay sir, permit sir? Yeah, you can. No problem. సార్, ఎక్కువగా గ్రామాలలో కొంతమంది బీపీఎల్ ఉన్నటువంటి వ్యూవర్స్ని ఆదుకోవాలని నా విజ్ఞప్తి సార్. సార్, ఆ దిశగానే పని చేద్దామనేసి ఆలోచన నడుస్తుందండి. మీ ఉద్దేశం, మా ఉద్దేశం కూడా అదే. ఎందుకంటే మామూలుగా అరుణ్ వారాడే గారికి తెలుసు, పూణేలో జ్యోతిరావు పూలే వాడ అని ఒకటి ఉంది. ఎక్కువగా స్కూల్స్ ఎడ్యుకేషన్ పైన ఫోకస్ చేయాలని నా అడ్వైస్ సార్. షూర్ అండి. మన వాళ్ళు వెనుకబడినటువంటి పిల్లలకి ప్రోత్సహిస్తే విద్య అనేది వాళ్ళని ముందుకు తీసుకెళ్తుంది కదా సార్. అవునండి. అల్టిమేట్ అనేది ఎడ్యుకేషనే. ల్యాండ్ ఉన్నా అయిపోతుంది, ఏమున్నా అయిపోతుంది. చదువు అనేది 10 మందికి ఇస్తాదనమాట. అవును, అదే చెప్పదలుచుకున్నాం సార్, అంతేం. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ. కొంతమందికి గోల్స్ ఉంటాయి, కానీ ఫైనాన్షియల్గా ఉండకపోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక డిగ్రీ చదివే విద్యార్థికి మనం సివిల్ సర్వీస్ కోచింగ్ ఇప్పగలిగితే వాడు సివిల్ సర్వెంట్ అయితే ఆన్లాంటి వాళ్ళని ఒక 20 మందిని తయారు చేస్తాడు. అవునండి. ఇది మీకు తెలుసో లేదో కానీ హైదరాబాద్ దేవాంగ సంఘం అసోసియేషన్, తెలంగాణ దేవాంగ సంఘం అసోసియేషన్ ది హాస్టల్ ఉందండి. అక్కడ ఆల్రెడీ ఇట్లాంటి ట్రైనింగ్ ఎగ్జామ్స్, ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కి ట్రైనింగ్స్ ఇస్తున్నారండి. అది మీరు వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేస్తే, హైదరాబాద్ తెలంగాణ ఆఫీస్ కోటిలో ఉంది, వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేస్తే ఆ వివరాలు అందుతాయండి. అంటే మాకని కాదు సార్. అంటే సార్, అంటే మీకు ఇప్పుడు మీరు ఈ టాపిక్ ఎత్తారు కాబట్టి మీరు చెప్తే మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి మీరు చెప్పగలుగుతారు అనేసి. ఓకే సార్. అది ఉందని నాకు తెలుసు సార్, అది ఉందని తెలుసు. అంటే ఇంకా బాగా బ్రాడ్గా కొద్దిగా థింక్ చేయమని అంతే, ఇంకేం లేదు. షూర్. ఓకే. అది ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ఇంకా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై విలేజ్ గురించి నేను చెప్తున్నాను సార్. మా విలేజ్ లో 30 ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి సార్, 35 అరౌండ్. ఎవ్రీ ఇయర్ మేము దసరా రోజు కలుస్తాం సార్ మా పిల్లలందరం. ఓకే. అంటే మేము ఏదో ఒక చిన్నగా మేము ఒక ఇది చేసుకొని అంత చేస్తున్నప్పటికీ మాకు చిన్న అది పురాతనమైన గుడి అయినప్పటికీ కూడా మేము షేరింగ్ హ్యాండ్స్తో మేము నడుపుకొస్తున్నాం. కానీ మాకు ధూపదీప నైవేద్యాలు కరువు అయిపోయింది అనమాట. అంటే మా విలేజ్ అనేది చాలా రోజుల నుంచి మా పెద్దలంతా తీసుకొస్తున్నటువంటి టెంపుల్, అది స్మాల్ టెంపుల్. అంటే అంత వాళ్ళు నాట్ ఓన్లీ వీవింగ్, దే ఆర్ అగ్రికల్చర్, నంబర్ ఆఫ్ ప్రొఫెషన్స్ చేస్తారు.
బట్ వాళ్ళ పిల్లలంతా కూడా మైగ్రేషన్ లో ఉంటారు, ఎక్కువ మంది చదువు లేకుండా కూడా. అదే. ఇయర్లీ వన్స్ కలుస్తాం అనమాట. ఓకే. అట్లా నేను ఎందుకంటే మనం చదువు లేని వాళ్ళకు కూడా కొద్దిగా వీవింగ్ పర్పస్ కూడా మనం హెల్ప్ చేయాలనేది గోల్ సార్ అల్టిమేట్ గా. ఇప్పుడు పవర్ లూమ్ సెక్టర్లు ఇప్పుడు సంవత్సరం మీరు అసోసియేషన్ తరఫున మన అసోసియేషన్ తరఫున ఇయర్లీ 1 విలేజ్ అడాప్ట్ చేసుకోమని మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం సార్. ఏదైనా మీరే సర్వే చేయండి, మీరు ఓన్ సర్వే, అది ఫ్రాడా లేదంటే ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉందా అనేది మీరు సేకరించి డేటా బేస్ చేసుకొని మీరు వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయమని నేను అడుగుతున్నాను సార్. ఓకే. అది సార్. What is saying? Yeah, I will explain in Hindi once again. English. అయిపోయిందండి? ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. రైట్, థ్యాంక్ యూ అండి. అది మీరు మ్యూట్ చేసేయండి. अरुण जी, इट इज फॉर एवरीवन. अभी रामचंद्र जी क्या बोल रहे थे कि उन लोगों का गांव में एक नहीं बेसिकली फर्स्ट ही स्टार्टेड विथ पहला अपन बीपीएल के बिलो जो भी फैमिलीज है उन लोगों को सपोर्ट करना है, जो वो भी वीवर्स या अदर प्रोफेशंस में ऐसे वालों को अपने देवांगन कोस्टा कोस्टी में जो भी है उन लोगों को सपोर्ट करना है बोल के पहले बोल रहे थे. एंड सेकंड पॉइंट क्या था कि एजुकेशन के ऊपर थोड़ा स्ट्रेस देना चाहिए और उन लोगों को सपोर्ट करके अपन फंडिंग या उन लोगों को प्रोत्साहन करना चाहिए बोल के एक बोल रहे थे. और तीसरा पॉइंट क्या था कि जो भी है वो ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ देवांगन है ना, वो ऑल ओवर इंडिया एक एक विलेज को अडॉप्ट करो. जो भी आप लोग क्या है रिसर्च करके वेयर इट इज अ नीड उन लोगों को आइडेंटिफाई कर लो और करके स्टार्ट करो so that it will be a help for them. And fourth point he was talking about was उन लोगों के गांव में एक टेम्पल है वो जो बहुत ही पुराना है. वो टेम्पल को उन लोगों के विलेज वाले सम 35 फैमिलीज है कहते वो विलेज में उन लोग आए वो सपोर्ट करके वो डेली धूप दीप नैवेद्य का काम उन लोग देख रहे बोल के ये पूरा उन लोग देख रहे. ऐसे अपन भी अपना समाज को करना है बोल के वो बोल रहे थे. Okay. So give him some tips about this thrift society. No, So, I already told him that basically we are already in the process of the thought process of that only, and we are looking into it. What okay, I told him at a very high level. I didn't open up that discussion of thrift cooperative society and all. Okay. Thank you very much. All right. సార్ నమస్తే, వాళ్ళ ఊరు పేరు ఏం పేరు సార్? అనంతపూర్ దగ్గర ఏదో ఊరు చెప్పారండి. రామచంద్ర గారు మీరు ఒకసారి చెప్తారా మీ ఊరు పేరేంటో? హలో, చెప్పండి సార్, మీ ఊరు పేరు ఏంటి అని అడుగుతున్నారు త్యాగరాజు గారు. పోలం వాన్లపల్లి, నల్లమాడ మండలం సార్, అనంతపూర్ డిస్ట్రిక్ట్. పోలం వాన్లపల్లి సార్ టైప్ చేయండి సార్, చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. ఇక్కడ ఉందా సార్ చాట్ బాక్స్? ఇక్కడ మీరు 3 డాట్స్ ఉన్నాయి కదండి, అది నొక్కితే ఇన్ కాల్ మెసేజెస్ అని ఉంటాయి. దాంట్లోకి వెళ్ళి మీ నేమ్, మీ ఫోన్ నెంబరు, మీ ఊరి పేరు 3 టైప్ చేయండి. Any other discussion? Any other person who is related having questions in regards to career educational counseling or anything, please come up. And one more thing, Ramchandra Machaji is a teacher by profession. He is from Anantapur district. That's what he told. I forgot to give that in the initial. Okay.
लोकी जी आप है क्या, मतलब कहीं बाहर गए? I think he left the call. ओके, मिस्टर समीर उकंडे, समीर समीर उकंडे, आप कुछ पूछना चाहेंगे? మిస్టర్ సమీర్, సార్ మెసేజ్ పెట్టాను సార్. ఓకే అండి. So let us start some general discussion. If Yeah. nobody is asking the question. Basically, I will start with that thrift only so that Ramchandra Machaji can understand and all the people in the group can understand. Yeah. Please. Because that is one which is going remotely away from this group. Sir, अभी सब लोगों को हिंदी में समझ में आया तो समझ में आता बोल के मैं हिंदी में ही बात कर रहा हूँ. तो थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी बोल के एक स्टार्ट करने के लिए अरुण जी के अध्यक्ष में एक डिस्कशन चल रहा है. वो दूसरा ग्रुप है, उसमें जो भी लॉयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और इसके बारे में थोड़े लोगों को जिसको मालूम है उन लोग वो डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. वो उसमें हम सब लोग ऑल इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करने के लिए फ्रेमवर्क बना रहे हैं. उसी के वास्ते डिस्कशन हो रहा है अभी. तो किसी को उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है या कुछ डिटेल्स मालूम है तो आप भी बात कर सकते इधर. तो वो सुनने के बाद अगर इन लाइन हम लोग जो सोच रहे हैं वो उसी के लाइन है तो आपको भी वो एफर्ट में शामिल करने के लिए ट्राई करेंगे. अरुण जी करेक्ट है ना? Yes, right. Okay. अभी रविशंकर जी ने जो बताया कि ये रामचंद्र जी है अनंतपुर से, नहीं फ्रॉम अनंतपुर. हाँ, यस सर. तो उन्होंने एजुकेशन और इसके बारे में पूछा था. तो अभी रविशंकर जी ने बताया कि ऐसे एक थ्रिफ्ट सोसाइटी के बारे में हम लोग कुछ लोग सोच रहे हैं इसके बारे में, जिसमें मतलब इंटेलेक्चुअल पीपल इन्वॉल्व हुए हैं, कोई वकील, सीए और जो भी मतलब समाज के लोग, अच्छे लोग हैं, वो लोग इसके बारे में सोच रहे हैं कि ऑल इंडिया लेवल पे ये थ्रिफ्ट सोसाइटी के माध्यम से हम समाज को किस तरह से हेल्प कर सकते हैं. तो इसके बारे में अगर किसी को अगर कुछ जानकारी है या कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज बोलिए. हाँ हेलो. या प्लीज राजीव जी. हाँ, इस बारे में हमने कुछ वीक पहले डिस्कशन हुआ था कि हम इस तरह का कुछ फ्रेमवर्क करना चाह रहे हैं, फिर उसको फाइनल रूप दिया जाएगा. तो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए कि किस स्टेज तक पहुंचा, क्या उसका कुछ ब्रॉड लाइन कुछ डिसाइड हुआ है जो इस मीटिंग में आप कहना चाहेंगे कि कहाँ तक हम पहुंचे हैं या क्या उसका शेप अभी तक आया है. रविशंकर जी प्लीज. या 2 इनिशियल डिस्कशंस हुआ राजीव जी. तो पहला कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करना बोल के एक सोच रहे थे, वो तो फाइनलाइज हुआ. मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी फाइल करेंगे बोल के. 2, वी आर going into the next level of discussion of what is that framework, what are the bylaws which we need to adapt, how we need to identify the loanees who are looking for loans, why we should give loan, who is the authority who is going to authorize that he is an eligible person. ये पूरा डिस्कस कर रहे हैं. तो इसी के बारे में डिस्कशन चल रहा था. दो सेकंड मीटिंग में ये पूरा डिसाइड हुआ कि there should be multi-level, which is from a village to a mandal to a district, then to the state level. That is the approval process which we are going through it. And the criteria for giving the loan is, first priority would be given to weaving
weavers and weaving community for weaving and its allied activities like dyeing, printing, epura. Second on the priority list would be education, and third are the last one which you are looking at is health. Health is given a last importance because in health, when we try to give health, the challenge is it is more of a give and no take. We will not get the money back. So we are we are trying to model it in a different way, and that will come in the second phase of the society which we are going to incorporate, not in the first phase. That is the initial discussions which we are in right today. Okay, fine sir, fine, thank you sir. Any राजीव जी, input आप उस from you, we can ग्रुप में always है ना take your आप शायद? suggestions. राजीव जी, Sir, हाँ सर, sorry. हाँ जी। आप उस ग्रुप में है शायद? नहीं, मैं उस ग्रुप में नहीं हूँ सर। नहीं है अरुण जी, नहीं है। अच्छा, चलिए, आपको मतलब कल ऐड करने के बोलता हूँ उनको और लोकेश जी को। इन्फॉर्मेशन के लिए क्या स्टेज पे पहुंचा कि बहुत नहीं, पहले अच्छा है, मतलब मैं ये तो मतलब ये समझ रहा था कि आप उसमें है, तो आई विल आस्क लोकेश टू ऐड यू। शायद मैं बहुत उसमें कंट्रीब्यूट ना भी कर पाऊँ, जैसे आपने कहा कि उसमें सीएस या फिर लॉयर्स ऐसे बुद्धिजीवी लोग ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, बट मैंने ऐसा ही जस्ट पूछा था कि क्या हो। देखिए, आप भी बुद्धिजीवी है, यू आर आल्सो इंटेलेक्चुअल। क्योंकि सर इंजीनियर इज इटसेल्फ ए इंटेलेक्चुअल पर्सन। So No, basically we have not only CS and chartered and advocates. We have people who are already part of the society in some other organizations, so that they bring in that knowledge to the group and they share their experiences so that we can come out with a proper and a right framework राइट without any flaws. ये That तो is the intention. 100% राजू जी कि इसको हम मतलब 2022 में तो बिल्कुल इसको चालू करेंगे। बहुत अच्छी, ये तो हम लोगों ने सभी ने मतलब तय कर लिया है। राइट। इसमें तो बेसिकली अभी तो लीगलिटीज ज्यादा है, लीगल टर्म्स ज्यादा होंगे, तो उन चीजों वही उसी के ऊपर डिस्कशन चल रहा है कि इन व्हाट वे दिस बायलॉ शुड बी एंड टू whom the loan is to be given, राइट and how it is to be recovered. यस सर। All these things we are at that stage today. So in next meeting on Sunday, you can also join. I will ask Lokesh ji to add you in that group, and you can also add your ideas. Hello. Yeah, Chandra Pillaji. Go ahead. Arunji, Chandra Pillaji want to talk. Yeah, please. Sir, good evening, sir, everybody. Good evening. Good evening. अभी बात सुन रहा है थ्रिफ्ट सोसाइटी। Actually, in our steel plant, we are having cooperative thrift and credit society. First of all, we should collect the share capital of the member and where is the central point. And Ravi Shankar ने बताया कि loans distribution is separate, and loan giving time also we have to take the sureties of the members. These are all the system of the credit and thrift society. So before doing all these things, already they have discussed bylaws, are very important, education, and the online transaction. If we so this is the system we are following in our steel plant area. As a member, I know something about thrift and credit society. Yeah, you can add. So we are going to have a multi-state cooperative society at national level. Okay. Chandra Garu. Okay. Tell me, sir. Where is central point? And now who is these members? No, not yet decided. It is not yet decided. We are discussing. Sir, that we haven't come out with yet. We have decided that we'll go. Sir, you can remove your video so that the voice will be clear from your end. Okay. Chandra Garu.
Your voice is breaking, so please remove your video and it will be audible for everyone. His video is not on. Okay. First thing to answer to you, to answer to your question, we have not decided where will be the central office. We have decided that we'll come out with a multi-state cooperative society. And who are the members? Everybody who is part of the weaving community, whether it is Devang, Costa Costi, will become a member. And the societies will become the members initially of that respective village, mandal or district or state. These are the basic things we have identified, but we are still in the process of finalizing many other things as the discussions are going on. So that is where we are, sir. Okay. Very good. Okay, sir. Good. Go ahead, sir. Go ahead. शंकर राव जी सर। हाँ अभी दो मीटिंग हुई है। हम लोग जो मतलब इस सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं ना, ऑल इंडिया मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसकी 2 मीटिंग हुई है। और उसमें मतलब किस तरह से इसके बायलॉज रहेंगे, क्या क्या रूल्स रहेंगे, इसको मतलब लोन दे सकते हैं और कैसे इसकी रिकवरी होगी, ये सारे पॉइंट पे मतलब डिस्कशन चल रहा है। हाँ अच्छा अच्छी बात है। और हो सकता है कि आप भी थोड़ा सा संडे को ज्वाइन होते जाइए। अच्छा। संडे को रात को 8 बजे मीटिंग रहती है वो। हाँ, तो आप भी आते रहिए, तो मतलब आप भी अपनी बात रख सकते हैं। अच्छा। रविशंकर जी, हाँ जी, I am just thinking after Diwali, so we'll be having 2-3 more meetings up to Diwali, and we should meet at Hyderabad at first level. Yes, sure, sir. So we'll decide. I will talk with Cholaji and we'll decide the date and venue, and we'll call all the concerned people, and other people can also join it. Yep. So it will be face-to-face meeting, and I'm just thinking for 2 days meeting. Okay. So 2 days will be too long enough fun initially, because let us have 1 day, and then based on the first in-person discussion, we can extend the next meeting to 2 days if needed. But can we cover all these things in 1 day? Yes, sir, we can. No doubt, then it will be for 1 day only. Yeah. Sir, actually next Sunday is coming. No, Mr. Kararavi is preparing the bylaws and everything. If you finalize the bylaws, and 1 day we will go for directly meeting, then it will come so many points. It will come because after 2-3 after meetings, the press Diwali, yes, what you say, correct. I am proposing it after Diwali. Yes. Maybe at the end of the November, so that we can have 3-4 meetings. Yes, sir. Mainly bylaws we have to check up, sir. That's all. Yeah. After that only we will finalize, sir. That name, that is name also you can choose, sir. Name. In due process, we'll decide it. Yes. Okay. That is all points all okay, sir. That what we discussed last week also same only. But bylaws is the most important. Last time I was not present, but last week we are not. But we are putting the whatever main points also. I put into the group also. Swamiji, yes. Lokesh sent me the video, and I have gone through that video. Yes. I got all the points. Yes. And this Madhu Appaji's points are also valuable. So we'll decide in due course. Okay.
That is the main thing. इसका Okay, that माइक is चल रहा है the. जिसमें वॉइस आ रहा है प्लीज Yes, sir. Hello. माइक इज Please ऑन एंड mute everybody. Mute your so that we don't hear the background noise. शंकरराव जी आपका माइक बंद कर दीजिए डिस्टर्बेंस हो रहा है कहीं से कुमार स्वामी Yes, sir. I think Kumaraswamy ji ka hai. హలో Sir, Arun ji, बोलिए, what you want to tell it? Tell. I will talk later. नहीं मैं तो ये कह रहा था कि मैं आई वॉज नॉट प्रेजेंट इन दैट संडेज मीटिंग बट आई हैव गॉन थ्रू द वीडियो लोकेश जी सेंड मी द वीडियो ऑफ दैट मीटिंग and fruitful discussion was held in that meeting. So let us have new chapter in coming Sunday. And I have gone through the Yes, sir. all the Yes, sir. points of Madhu Appaji also. He has given good suggestions. And he sent a document which was very detailed and it is very clear, sir. If whatever we need to do it, he put it in a very systematic format in that document. Yeah. Sir, my I have also taken the print of that all his points. రవిశేఖర్ సార్ Yes, sir. Yeah, please. sir, one thing, sir. Sir, are you listening? Sir, one thing, sir. Yeah. Please go ahead. This society may you are involving all the viewers or only Devanga community? No. Only Devanga and Costa committee, not all the viewers. Yes, very good. If you we should not go, not No, involve the other. No other viewer, no other caste, viewing caste will be incorporated. Only for Devanga and Costa, these communities will be covered. Very good, sir. Very good. Thank you. Yes. రవి సార్ Yeah, please go ahead. సార్ రవి సార్ సార్ ఒక ఐడియా సార్ మేము ఇవ్వాలనుకున్నాం మీకు మీ దృష్టికి చెప్పండి. సొసైటీ అన్నారు కాబట్టి సొసైటీకి సంబంధించి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సొసైటీలో ఉన్నటువంటి మెంబర్స్ నామినల్ మెంబర్షిప్ అనేది ఫస్ట్ డేటాబేస్ కలెక్ట్ చేస్తారు. అది గ్రాస్ రూట్ నుంచి సెంట్రల్ వరకు కూడా నామినల్ మెంబర్షిప్ ఫీ అనేది ఉంటే ఆ మెంబర్షిప్ ఫీ ద్వారానే వాళ్ళకు మీరు హెల్త్ ఇన్సూర్ చేయొచ్చు, హెల్త్ కార్డు ఇవ్వచ్చు. ప్లస్ ఇన్సూరెన్స్ అంటే ఇన్సూరెన్స్ ఎందుకు చేస్తారంటే వాళ్ళు అప్పు తీసుకున్నప్పటికీ ఇన్ కేస్ డెత్ అయినప్పటికీ ఆ అప్పు రికవర్ అనేది ఇన్సూర్ అనేది మీకు యూటిలైజ్ అవుతుంది సార్. సార్ అవన్నీ మాట్లాడుతున్నాం సార్, అవన్నీ కూడా పాయింట్లు డిస్కస్ చేసాం ఆల్రెడీ. మీరు చెప్పిన పాయింట్స్ వ్యాలిడ్ పాయింట్స్, మేము అవన్నీ డిస్కస్ చేసామండి. అవన్నీ కన్సిడర్ చేస్తున్నాము. అంటే మెంబర్స్ ఎవరైతే జాయిన్ అవుతున్నారో వాళ్ళు మెంబర్షిప్ ఫీ వాళ్ళకు ఉంటుంది. మెంబర్షిప్ ఫీ అనేది కంపల్సరీ పెడితే బాగుంటుంది సార్. అట్లా అది సీరియస్ గా ఉంటుంది. పెడుతున్నాము అవన్నీ ఉన్నాయి. కోఆపరేటివ్ సొసైటీ మెంబర్షిప్ ఫీ కంపల్సరీ ఉండాలా? కంపల్సరీ, అవునండి, ఉంది, ఆల్రెడీ ఉంది. ఆ డిస్కషన్ లో వచ్చింది ఆ పాయింట్. అది ఎంత అన్నది ఇంకా ఫైనలైజ్ కాలేదు, కానీ మెంబర్షిప్ ఫీ ఇంత ఉండాలి, ప్రతి మెంబర్ కి ఇంత ఫీ ఉంటుంది. ఎవరైనా లోన్కి వచ్చారంటే వాళ్ళు మినిమం ఇన్ని నెలల నుంచి మెంబర్ అయి ఉండాలి. ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయండి, పాయింట్స్ డిస్కస్ చేసాము, అవన్నీ రాస్తూ ఉన్నారు పాయింట్స్ అన్ని కూడా. ఓకే సార్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఆ గ్రూప్ ఉంది సార్, అందులో మిమ్మల్ని కూడా యాడ్ చేస్తాము. మీకు కూడా ఆడ ఏమేమి జరుగుతున్నాయి ఇంటర్నల్ గా అనే విషయాలన్నీ కూడా అర్థమవుతాయి సార్. क्या बोल रहे हैं त्यागराज जी? सर मैं बोला अभी हमारा थ्रिफ्ट का ग्रुप है ना, अभी ये सार का पास पसंद मिलेगा तो आने के लिए, इच्छा मिलेगा तो हमको ये ग्रुप के लिए स्वागत करने के लिए बोल रहे हैं सर. अच्छा, ठीक है, ओके. चलिए चंद्रमौली जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? चंद्रा जी. नहीं सर, कुछ नहीं. डेवलपमेंट अच्छा है,
So, thrift society is one of the welfare measure for our community, and we all already. चंद्र जी, आप अपना वीडियो बंद करिए प्लीज. क्लोज योर वीडियो एंड ओनली स्टार्ट योर ऑडियो. योर वॉइस इज ब्रेकिंग. योर वॉइस इज नॉट कमिंग क्लियर. Video कुछ नहीं sir. No. Put off the video. Your face is there on the screen. So you can కాదు put సార్, off the మీరు video. వీడియో ఆఫ్ ని చేయండి. వీడియో ఆఫ్ చేయండి, అప్పుడు మీ వాయిస్ వినబడుతుంది. మీ మాట అర్థం కావట్లేదు ఎవరికి కూడా. వీడియో లేదు సార్. నో వీడియో సార్. మీరు వీడియో కనిపిస్తున్నారు మీ Now your video is off. Okay. No, he Carry is on, totally please. logged off. I think today we don't have any students to discuss any questions on that. sir. Sagar बोलिए. सर सागर जी बोलिए. आंध्र प्रदेश में ये 6 महीने के आगे एक वेद पाठशाला के लिए एक रिक्वेस्ट मिला. इसलिए हम लोग ज्यादा आदमी पंडित है और सिद्धांती है, उसको और इसी समय में कोई भी सीखने वाला भी है, उसके लिए वेद पाठशाला में ज्वाइन करने के लिए सब लोग पूछा. ये हम्बल रिक्वेस्ट किया हमारा चला रामाराव जी से. उसके लिए अभी कुछ यूनिवर्सिटी में ज्योतिष्य और कभी कभी कोर्सेस हैं, इसलिए हम लोग उसको भी उसमें भी ज्वाइन करके थोड़ा ये ऐसा तरह ज्योतिष्य और वास्तु और पंडित में उसमें भी थोड़ा डेवलप होना चाहिए. इसके लिए इसलिए हमारा सिद्धांत और पुरोहित में थोड़ा सीख के समाज में काम कर रहा है सर. इसलिए ये मंदिर में पुजारी तरह और कोई भी होम ऐसा कर रहा है. फिर ये लोगों को एक सर्टिफिकेट तरह कोर्सेस है यूनिवर्सिटीज में, उसमें हम थोड़ा मोटिव करेगा तो ये लोग सर्टिफाइड सिद्धांती और सर्टिफाइड पुरोहित हो जाएगा. इसके लिए मैं शाम को चला रामाराव जी से बात किया. ये उसका पास एक प्लानिंग है. इसी समय में उसके लिए भी हम एजुकेशन में एक सब्जेक्ट है, उसको भी हम थोड़ा, इसलिए डिग्री होने के बाद भी उसमें जा सकता है. कोई भी क्या बोलता है वोकेशनल कोर्स तरह भी कर सकता है सर. उसी तरह हम लोगों को थोड़ा दृष्टि उसमें लगना चाहिए सर. इसलिए मैं बोल रहा है, हमको एक बेटा भी है, गायत्री बेटा, इसी का सपोर्ट लेके इसलिए हम कोई भी लास्ट ईयर में इधर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट में ये पुजारी के लिए, अर्चकों के लिए एक प्लान, एक गवर्नमेंट का प्लान बनाया. उसमें भी उसको थोड़ा तनख्वाह देने के लिए देख रहा है. एक टेम्पल्स में कोई काम कर रहा है, उसको ज्यादा आदमी को भी ट्रेनिंग दे रहा है. फिर ट्रेनिंग देने के बाद उसको 2 लाख ऐसा उसका डिपॉजिट करके उसको समाज में भेज रहा है सर. समाज में जाके उधर क्रिया, हिंदू सामाजिक धर्म में क्रिया करके उधर से जीवन चलने के तरह अभी वेद पाठशाला चल रहा है. इसके लिए हम भी उसी में दृष्टि लगेगा तो हम लोग में भी कोई अच्छा रिकग्नाइज्ड सिद्धांती और रिकग्नाइज्ड पुरोहित भी आएगा सर. इसके लिए हम थोड़ा उसमें दृष्टि करना चाहिए सर. ठीक है, एक दिन उनको बुलाइए, हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा जानकारी लेंगे. ओके सर. त्यागराज,
आपने जो विषय रखा है ना, उसके बारे में जो भी कंसर्न है उनको बुलाइए एक आध दिन, और एक दिन हम लोग इसके ऊपर चर्चा भी करेंगे और देखेंगे फिर क्या कर सकते हैं। हाँ? ओके सर, ओके। वेडनेसडे के दिन ही बुलाए तो हो जाएगा। वैसे भी हो जाएगा। अरुण जी, आप अगले बुधवार को उनके नाम मुझे दीजिए क्या, तो उनको भी हम लोग इस मीटिंग में बुला सकते हैं बुधवार को। और ये त्यागराज जी, ये अपने अनंतपुर वाले जो है ना, क्या नाम है उनका, रविशंकर जी? रामचंद्र मच्छा, हाँ, रामचंद्र जी टीचर, रामचंद्र रामांजनेय रामांजनेय मच्छा, सॉरी, रामांजनेय मच्छा। उनको ये बोलिए कि कल यू जस्ट आस्क हिम टू ज्वाइन टुमारो आल्सो, टुमारो इज बिजनेस मीट, सो ही कैन आल्सो पार्टिसिपेट। या श्योर श्योर। पांडु जी आप भी रहिए। यस सर, आई विल बी देयर। या सो शंकरराव जी कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, मैं एक दो शब्द कहूँगा कि अभी बोलिए। त्यागराजू ने कि पुजारी के बारे में बताया ना, एक वो धार्मिक दृष्टि से और ये पूजा अर्चन और ऐसा आगम शास्त्र की करने वाले कि हमारा कम्युनिटी में, देवांग और कोष्ठा कोष्ठी कम्युनिटी में बहुत लोग कम है। कि कर्नाटक में, नॉर्थ कर्नाटक में कि बेलगाम, बीजापुर, ऐसा एक 7-8 डिस्ट्रिक्ट में ऐसा ये हमारा देवांग कम्युनिटी के देवांग मठ नाम के अड़े सरनाम से एक 200-250 फैमिली है। हाँ, उसके उन्होंने ये अर्चक का काम, पुजारी काम और आगम शास्त्र और शादी का पौरोहित्य काम, ऐसा थोड़ा थोड़ा फैमिली लोग कर रहे हैं। उसके लिए इकट्ठा लाकर एक व्यवस्था रीत से, म्हणजे एक सिस्टमेटिक रूप से उनको एक शिक्षण और उनका जीवन निर्वहन के लिए एक अच्छी मार्ग और धार्मिक प्रचार, ऐसा जिम्मेदारी देने के लिए हम 1-2-3 साल पहले देवांग गुरु मठगढ़ परिषद नाम से हमारा संस्था एक निर्माण किया था। अभी उन्होंने एक छोटा रूप से एक्टिविटी चल रहे हैं और साल में 1-2 बार हम बनशंकरी बादामी में उसका एक 8 दिन का वर्कशॉप रहते हैं छुट्टी दिन में, लेकिन बहुत स्मॉल प्रमाण में है। इसके लिए उसका एक संगठित रूप से एक पौरोहित और अर्चक और ऐसा काम करने वाले को उसका भी उनका उपयोग होगा, फैमिली और समाज को उसका धार्मिक दृष्टि से अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा, ऐसा मेरा कहना है। और हाँ, सोचेंगे उसके बारे में, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपने जो बोला जो 200-250 फैमिली है, ये कौन से एरिया में है? नहीं, हमें सब डिस्ट्रिक्ट में है देवांग मठ फैमिली। उसका अभी हम एसोसिएशन किया है और वह इलकल में उनका अध्यक्ष रहते हैं विजय कुमार देवांग मठ। हमारा दयानंद पुरी स्वामी जी है ना, उनके नजीक से आदमी है सब, उनका फैमिली के हमारा ये हम गुरु बोलते हैं ना, ये गुरु मठ। अभी लिंगायत में अभी हिरे मठ ऐसा लोग रहते हैं ना, ऐसा हमारा कम्युनिटी में पौरोहित्य करने वाले लोग हैं। ऐसा आंध्र में भी रहेगा, तेलंगाना भी रहेगा, तमिलनाडु में रहेगा। उसका उनका सहाय लेकर ये काम किया तो बहुत अच्छा होता है। ये जो पहले जो ये महाराष्ट्र में शिंगे लोग आते थे, शिंगे, हाँ, अच्छा, वो इन लोगों के बीच में से थे क्या वो? वो शिंगे लोग हमारे यहाँ महाराष्ट्र में पहले आते थे। नहीं, वो लोग नहीं है। वो उसका अलग है क्या? हाँ, वो अलग रोग है। वो सिंह दौरो ऐसे बोलते थे ना। वो लोग अलग है, ये फैमिली अलग है। अच्छा, ये मतलब धार्मिक वो करते रीति रिवाज।
हाँ है, ये केवल हमारा ब्राह्मण अभी वैष्णव ब्राह्मण आचार्य ब्राह्मण है ना, हाँ ऐसा फैमिली है हमारा। अच्छा। हाँ वो आंध्र में भी है और हमारे ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ में त्यागराज आंध्र में भी है ऐसा? त्यागराज है कि नहीं है? ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ में भी है ऐसा। है सर, है। हाँ वो सब ये तेलुगु ऐसा है? भाषा बोलते हैं। कोलार त्यागराज आंध्र में भी ऐसा फैमिलीज है जो पूर्वंपार से पौर्यत्व करते हैं? सर हमारा लोग ज्यादा आदमी है सर ऐसा। अभी हाँ ब्राह्मण से आगे हमारा लोग इधर ज्यादा काम कर रहा है सर। हाँ अच्छा करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तमिलनाडु भी ऐसा है, हाँ तमिलनाडु भी है। इसलिए तो ब्राह्मण तो इसलिए नहीं कर रहे होगे कि उसमें ज्यादा पैसा नहीं मिल रहा होगा अभी। ऐसा नहीं, इसलिए हमारा रिकॉर्डिंग चल रहा है, इसलिए हमको हमारा प्रक्रिया थोड़ा ज्यादा है, अलग है। इसलिए ये मुहूर्त का समय में सीधा आके कोई 10 मिनट में 15 मिनट में 20 आधा घंटा में मैरिज हो जाएगा, हमारा प्रक्रिया ऐसा नहीं है। इसलिए इस देख के सोसाइटी में ज्यादा लोग हमारा संस्कृति लेने के लिए इच्छा कर रहा है। मैं इधर सामने में देख रहे हैं, हमारा 2 पुजारी हीरो कंपनी इधर नया बनाया, हीरो बाइक का, उसको नया गाड़ी बाहर आने के समय में ये उधर पूजा किया। ये कंपनी वाला पूरा खुशी हो गया ऐसा पूजा के लिए, इसलिए ऐसा तरह अच्छा नाम ले रहा है लोग। और मैं हमारा दोस्त एक आदमी है, ये SC STs भी हमारा पुजारी को बुला के मैरिज कर रहा है सर। इसलिए समाज में अभी सिद्धांति को पुजारी को संख्या थोड़ा ज्यादा कम है, उसको हम डेवलप करेगा तो हमारा आदमी लोग एक वंतरा ऑक्यूपेशन भी आएगा। और अभी कैसे चल रहा है, एक बड़ा वाला से जाके उधर श्लोका सब ये क्रिया वगैरह सीख के बाद में ये 4-5 आदमी एक जनरेशन में आ रहे हैं। ये लोग पूरा ओल्ड मैन होने के बाद दूसरा आदमी को फिर पिकअप कर रहा है, ऐसा तरह नहीं है। अभी एजुकेशन कैसे चल रहा है, एक साल को नया बैच ऐसा आ रहा है ना, ऐसा तरह हम थोड़ा मिनिमम एक साल को एक 20%, 30%, 40, मिनिमम 60% तक हम डेवलप करेगा तो उसमें समाज में भी हमारा आदमी को अच्छा जीवन भी मिलता है सर। इसलिए अभी ज्यादा टेम्पल में पुजारी का काम करने के लिए आदमी भी नहीं है। ज्यादा टेम्पल में सभी भी ऑल कम्युनिटीज में मैं एक सुनाया, टेम्पल्स है उधर पूजा करने के लिए आदमी नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। उसका तनख्वाह ज्यादा नहीं मिलता है उधर, बाहर काम करने के लिए से उधर अभी छोटा गांव में क्या करता है, उसको जीवन भी नहीं चलता है। इसके लिए इधर हम थोड़ा एजुकेटेड कर रहे हैं लोग को, इसलिए ज्यादा बड़ा टेम्पल जाके उधर ज्यादा पैसा खर्च करके उधर जाने के भगवान को प्रार्थना करने के समय में उसमें मिनिमम 50% इधर लोकल टेम्पल को डेवलप करेगा तो उधर एक पुजारी और उधर एक स्वीपर और कोई भी उधर 2-3 आदमी मिलता है। एक टेम्पल मिलेगा तो उधर वॉशरमैन मिलता है और उधर एक मंगल वाइद्य बनाए वाला मिलता है। और उधर ऐसा तरह एक उत्सव में सब कम्युनिटीज उधर में लिंक होता है, एक अकेला एक आदमी नहीं कर रहा है ना। ऐसा तरह लोकल में ज्यादा आदमी मिलेगा तो पुजारी हमारा लोग को थोड़ा कम्युनिटी भी अच्छा डेवलप होता है सर, इसके लिए बोल रहा है। ठीक है चलिए इसको एक आध बार डिस्कस कर लेंगे। आप जो भी कंसर्न लोग हैं उनसे बात कर लीजिए और उनको उपस्थित रहने के लिए कहिए। शंकरराव जी आप भी ये जो बोल रहे हैं उसमें से अगर 2-3 लोग अगर ज्वाइन होते हैं ना क्या अच्छा चर्चा में, ऐसा हाँ तो एक दिन चर्चा रखेंगे इसमें।
हाँ रखेंगे, जरूर जरूर। तो उसके लिए अपने को कंसर्न आदमी आपको उनको बुलाना पड़ेगा। नहीं 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 है, बहुत लोग है, हमें नॉर्थ कर्नाटक में ही 200-250 फैमिली है। यानी अपने हाँ अपने ये प्रोग्राम में डिस्कशन करने के लिए, चर्चा हाँ करने के हाँ लिए ना, हाँ हाँ, चर्चा करने दो की जरूर। दो तीन जरूर। लोगों को आप कंफर्म कीजिए उनका उपस्थित रहने का, अच्छा अच्छा अच्छा। बात कर ओके। लीजिए, ताकि हाँ फिर मतलब, और त्यागराज जी को बोलेंगे, ताकि जब मतलब चर्चा करेंगे तो वो लोग जानकार लोग होना चाहिए ना, हाँ है कि नहीं? अच्छे आइडिया। ये तो मतलब जो हमारी पुरानी परंपरा है उसको हम लोग कुछ कारणों से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, हाँ तो इसको मतलब ले सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। चलिए, अभी कोई और तो कुछ डिस्कशन नहीं है, तो Yeah, one question. पांडु जी, यू वांट टू से समथिंग, Yeah, प्लीज? I want to know, uh, is is there any engineering college or degree college or a medical college run by our community people in India? See, in Maharashtra, we don't have any engineering college, but we have high schools. We have school up to 12th, and there is no engineering college from our community. In Chhattisgarh, no such activities is there. But in Tamil Nadu, we have at least 4 or 5 पळनीस्वामी, engineering colleges in Tamil Nadu. Yeah, कोयमत्तूर Coimbatore. टी Yeah, पळनी and टी पळनीस्वामी। ऐसे 2-4 लोग हैं जो मतलब रन कर रहे, दे आर रनिंग द इंजीनियरिंग कॉलेजेस, Okay. and all these peoples are in touch with me. So do you want any information regarding that or what? Yeah. Since I have few information regarding the patenting and some other issues, so that if, with the intellectual information or that can be shared with those people, let them to get benefit out of it. Yeah, I will give you some numbers and you can contact them. Mr. Mathivan is there, Mr. Ravi is there. They are running the colleges. And Mr. Mathivan was with me in Delhi before 2 years, 3 years. And Mr. Ravi was also in contact with me. So you can proceed. Sure. Since Government of India, AICT, All Indian Technical Education Council, they are sponsoring or funding for the development of new research activities. So few engineering. This is new. This what you are telling is a new thing, or it is No, in running process. What? it is in running process, even though uh, to get a fund from AICTE or any funding agency, it is little bit difficult, and there is a lot of experience is required to get to write a funding proposals. And prior to write a proposal, they could have done some literature survey, and supporting publication has to be done based on their interest. So what my consent is, if our community people running either technical institution or medical institution, I have few concept. By using those concept, the faculty over there, they can try to publish some articles. Since I am reviewing some journals in world top 5 journals like IEEE and elsewhere, that is Science Direct journals, I am working as a reviewer. That experience can be shared with them, so that our community people will get more benefited. And due to the enforcement of new national education policy, there are a few other interdisciplinary research areas are coming up. For example, along with the computer science,
can we combine the textile and computer science? Can we have a few more research topics? Or chemical engineering for dyeing purpose? Does there any possibilities? Or shall we have the old technology to continue the weaving? Shall we adopt some more new weaving technology? Like that, there is a possibility of interdisciplinary research activities are going on. These activities are going to be funded by the National Funding Agency through either UGC or AICTE. Few even few principals or colleges are not aware, or even though if they are aware but not able to write the quality proposal to the funding agency, so that I may help them to do so. That's why I asked. Okay, I will give that number, and you can give my reference also and talk with them. Sure, sir. Arunji, one suggestion, please. Arunji. Instead, Panduji directly talking to them, because he is in a reviewer stage. Okay, so if he goes and says, "I can help you out" and all that, they will think there is something different. Instead, that's why I told him first give my reference. No. What I am suggesting is small thing. Just listen. If you can organize a call along with you to them and discuss, then Panduji can open up. Then it will be in a different mode. First, I will talk with them. Then Pandu can contact with them. That also works. That way it will be better, instead of he directly calling them and saying, "I can help," means they will think in a totally different way. That is the challenge. Maybe this may happen. Yes, because we are all Indians. We know. Suddenly somebody comes and talks to us saying, "I will help you." They think, why is he coming to me and trying to do this? They may not be responsible. Yes, that is exactly true. That is why. Okay, we'll arrange. Panduji will arrange. Sir, one information, sir. సార్ మీరు వీడియో కట్ చేసి మాట్లాడండి సార్. వీడియో కట్ చేసి మాట్లాడండి, ఎందుకంటే మీ వాయిస్ లో సార్ నౌ హియరింగ్ సార్. Please. Sir, one of my cousin brother's son is there. He is completed MTech in instrumentation and some control systems. He wants job in academics. Anybody can help him? MTech is a BTech, MTech in. Ravi Shekhar ji can help you. You just talk with him. Sir, I right now I'm actually disconnected more with the companies, so definitely we can work along with you guys and help where the opportunities are. But see, recently I helped one of our community person. You told me that. he gave us a big hand, and that blasted me in a different way from the other side. So it is becoming a challenge. When we take them, give them the information very clearly, saying, "These are the things you need to, if you are interested, only come forward." They will say everything, yes. And finally, once it is in their hands, then they will kick us on the back. That is the challenge. You told me that last time. Yeah. So some loop line should be there. You directly you are telling some information, some loop lines should be there. अच्छा, कुछ तो बताइए रवि शेखर जी, उनको वो मतलब थोड़ा सा मतलब मार्ग दिखाइए क्या? That boy is interested in academics. चंद्रा जी रवि शेखर जी बोल रहे थे कि हम लोगों ने मतलब ऐसे ही एक I think that guy is from Chennai, I think, no, Ravi Shekhar ji? No, sir, he is from Rajahmundry, Eluru. He is from Rajahmundry. और उसको मतलब रवि शेखर जी ने कुछ अच्छा ऑफर दिया था बेंगलोर के लिए, और वो उसकी मदर जो है वो थोड़ा सा ज्यादा मतलब हिंदी में होशियार बोलते हैं. इंटरफेयर. ट्रू. और क्लेवरनेस जो होता है ना.
ओके, चलिए ठीक है, अच्छा है। आप जब रविशेखर जी को फोन कीजिए, चंद्रा जी, और जो भी थोड़ा बहुत हेल्प वो कर सकते हैं तो हेल्प पाइए उनसे। हाँ, चलिए Okay, sir. देखो हम लोग अभी या प्लीज, क्या बोल रहे हैं? Sure, sir. Of course, sure. ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए हम लोग अभी समाप्त करते हैं। और त्यागराज जी, आप वोट ऑफ थैंक दीजिए प्लीज। हाँ सर, इसी कार्यक्रम में डिफरेंट स्टेट से भारत देश का पूरा ज्यादा आदमी मिला, ये शुभ परिणाम है। इसी तरह हमारा कम्युनिटी के लिए इतना आदमी मिलके इतना संभाषण चर्चा कर रहा है, उसके लिए हमारा AIDD KKF से फिर ज्यादा आदमी देखने के लिए तरह यूट्यूब में भी प्रसार करने के लिए प्लानिंग कर रहा है। इसी समय में और नया लोग आके हमारा कम्युनिटी के लिए ज्यादा सजेशंस भी दे रहा है। इसी समय में हमारा सीनियर पर्सन्स रविशेखर कालेपू जी और पांडुरंगा जी और शंकर बुचड़ी जी और कुमार स्वामी जी, चंद्रराव पिले जी और ऐसे तरह राजीव जी, ज्यादा आदमी आ रहा है। फिर अच्छा देशन भी दे रहा है। ये सब लोगों को उपयोग चलता है। ये पूरा ऐसा कार्यक्रम हमारा नेशनल प्रेसिडेंट अरुण वरोड़ा जी का आध्वर्य में चल रहा है। कौन पार्टिसिपेट कर रहा है उस लोगों को, सब लोगों को प्रत्येक धन्यवाद बोल रहा है। AIDD KKF से हमारा कम्युनिटी और अच्छा डेवलप करने के लिए ज्यादा आदमी आना चाहिए और ज्यादा अच्छा सजेशन देना चाहिए। उसके लिए हमारा गूगल मीट में सबको स्वागत बोलना चाहिए। ऐसा बोलने वाला को भी, आने वाला को भी, सबको हमारा कम्युनिटी से प्रत्येक धन्यवाद रहे सर। सभी थैंक यू का त्यागराज जी। Good night. Thank you. थैंक यू। Good night. Good night, everyone. Yeah. 1 मिनट, ओनली 1 मिनट। अभी ये देखा गया है कि हमारा प्रेजेंस बहुत कम होते जा रहा है पिछले कुछ दिनों से। तो पांडु जी, त्यागराज जी, शंकर जी, कुमार स्वामी जी, थोड़ा सा आप जो भी मतलब स्टूडेंट होंगे अपने टच में, उनको मतलब इसके कार्यक्रम में आपको बुलाइए प्लीज, क्योंकि हम लोग मतलब टाइम Sure, देते हैं। sir. Sure. Those who are We are always inviting, sir, people. Always inviting people. invite with their students should come, Sure. because Students, we are okay, spending okay. so much precious time. Ravi Shekhar ji is giving his precious Yeah, time, and if correct. there is no response, then it is not good for the our society also. Yeah, correct. तो हम लोग मतलब प्लीज आप सभी ट्राई कीजिए लोगों को मतलब इसको ज्वाइन होने के लिए। Okay. चलिए, Nice. ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि। Good night, sir. Good night. Thank you. Good night, all. गुड नाइट, शुभ रात्रि।